द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो हाल फिलहाल में काफी बढ़ गया है। जी हाँ, ये मुद्दा है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लेके। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा, इधर पिछले कुछ समय से काफी ऐसे मामले आए जब एक ही अपराध को लेके या एक ही किसी मुद्दे को लेके हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, कई शहरों में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हाल ही का मामला किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उससे पहले ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेके जब विवाद काफी बढ़ा हुआ था, उस समय भी अलग अलग जगहों पे कई सारी एफआईआर किसी खास व्यक्ति के खिलाफ या किसी खास सेलिब्रिटी के खिलाफ दर्ज हुई। फिर उसके बाद मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसमें एक फैसला दिया। इन सब बातों पे बात करेंगे हम आज कि ये एफआईआर कैसे लॉन्च होती है, कैसे अपराध कहीं होता है या कोई इंसिडेंट कहीं होता है और उसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में एफआईआर कैसे दर्ज हो जाती है, क्या है इनके बारे में नियम, क्या है कोर्ट का कहना, क्या सुप्रीम कोर्ट की राय है इस बारे में सारी बातचीत के लिए आज हमारे साथ है दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक सूद जी। विवेक सूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लीगल प्लेटफॉर्म में। लेकिन हम बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आप सब लोगों से, अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा चैनल है द लीगल प्लेटफॉर्म, इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए अगर आपने किया हो तो बेल आइकन दबा दें जो उसके बगल में बना हुआ है, ताकि आपको जब हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। विवेक सूद जी, अब मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि ये जो एक किसी मामले में या किसी घटना को लेके या किसी ट्वीट पे जो अभी हाल में हुआ, हिंदुस्तान भर के अलग अलग शहरों में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, इसके मामले में नियम क्या है? सबसे पहले मैं नियम जानना चाहूंगा, अगर आप संक्षेप में बता। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक द लीगल प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव माय व्यूज, and this is a very important issue that has been taken up by the legal platform. देखिए, FIR is the first information report of an offense. So an FIR really sets the criminal law in motion, and there is no restriction that multiple FIRs cannot be registered, especially in offenses concerning speech, incitement to violence, etc., sedition. जो स्पीच रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, जो इंस्टिगेशन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, और ऑफेंसेस लाइक सेडिशन which have a larger impact than on an individual. For example, let us take the case of a murder or kidnapping or rape, where the victim is one or few or more. Here the victims can be anybody. These offenses by their nature are such that the victims may be multiple in numbers. So therefore, every victim is entitled to move the criminal law in motion by making a complaint to the police station and getting it converted into an FIR. That is why you have multiple FIRs with respect to these offenses specially. आपको मर्डर और रेप और किडनैपिंग में मल्टीपल FIRs नहीं मिलेंगी, because the nature of the offense is very victim centric, if I would say. जी जी। So इसमें जो law है, law is very clear. You can't stop anybody, you can't stop any complainant or victim from filing a complaint to the police station where he says, I am a victim of this crime that has been committed. Please register an FIR and investigate the offense. That is why these multiple FIRs are permissible in law. Now, how this is exercised or how these FIRs are got registered
or what are the motives behind multiple FIRs, that's a separate issue. That's a different issue which I will address. Whenever you will ask me the relevant question, then I will address that issue. But multiple FIRs are permissible as per the Code of Criminal Procedure of 1973. जी, अच्छा, जो ये मल्टीपल एफआईआर, जैसा आपने कहा कि मैं आपके अब उसी सवाल पे आ रहा हूं जिसके लिए आपने कहा कि ये इसका मोटिव क्या है, ये क्यों दर्ज की गई, कैसे दर्ज की गई, इसको लेके क्या कोई नियम है कि क्या मोटिव, अगर कोई एफआईआर किसी एक मुद्दे पे, जैसे हाल ही में अभी जो किसान आंदोलन पे एक ट्वीट को लेके कई सारे पत्रकारों और कुछ नेताओं के खिलाफ अलग अलग जगहों पे एफआईआर दर्ज की गई, तो इसमें मोटिव कैसे तय होगा कि क्या मोटिव है, किस मोटिव से तय दर्ज की गई है एफआईआर? उसमें शिकायत में तो लिखा होगा, एफआईआर जो कंप्लेंट हुई होगी या जिसमें एफआईआर दर्ज हुई उसमें लिखा होगा कि हमारी भावनाएं आहत हुई या हमें इससे ठेस पहुंची या कोई और वजह है। लेकिन जो मुद्दा है, एक जो कॉमन सेंस में जो समझ में आता है कि एफआईआर जहां पे क्राइम हुआ हो या जहां पे क्या कहते हैं उसका इफेक्टेड पर्सन हो, वो जैसे आपने राइटली कहा कि इफेक्टेड पर्सन कहीं भी हो सकते हैं हेट स्पीच के मामले में, तो मोटिव कैसे तय होगा कि ये मोटिव किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, एक जेन्युइन एफआईआर है, ये कैसे तय होगा? It's a very interesting question and a very, very significant issue. Now, motive is a frame of mind, basically. It is like mens rea, it is like intention. Now, motive can be ascertained or can be determined by conduct. It has to be inferred from the conduct, from the circumstances surrounding the transaction or the incident or the multiple complaints. And motive has to be decided on a case-to-case basis. There cannot be, one formula. You cannot say that just because there are multiple FIRs, therefore there must be some political motive behind it. You cannot deduce, this motive merely because multiple FIRs have been registered. Now, I am not going into specific incidents, but in one of these cases, for example, let us take the case of Arnab Goswami. Now, if you read the Supreme Court judgment in Arnab Goswami 1, there it was argued on behalf of Mr. Arnab Goswami that please see these complaints and FIRs. They are all similarly worded. Yes. Similar words, similar paragraphs, similar contents are there. Now, because of the similarities, you can ascertain the motive in this case. कि अगर सेम वर्ड, सेम एक्सप्रेशन, सेम पैराग्राफ्स यूज हो रहे हैं, सो कहीं ना कहीं बिहाइंड दीज एफआईआर्स देयर कैन बी वन सोर्स. So it was the case put forth by Mr. Harish Salve, who represented Arnab Goswami. If you read that judgment, I have read the judgment. So in that judgment, it is stated that it has been argued on his behalf that these multiple FIRs are carrying similar contents. Therefore, there is a motive. Now the other side immediately withdrew the other FIRs and complaints. They made a statement to the court that we fairly concede this point and only one FIR may be kept alive. So there are various ways and mechanisms to ascertain motive. Now, in the case of, say, MF Hussain, now there were multiple FIRs registered across the country against MF Hussain. Now, there was no common motive behind those FIRs. There are citizens in different parts of the country who feel that they are victims of this crime of incitement to religious feelings or demeaning a particular religion, etc. So those multiple FIRs, in my view, appear to be quite genuine in different parts of the country. Of course, they were quashed
because they were found to contain no offense whatsoever. They were only works of art. So they were quashed on different grounds. So motive is to be ascertained on a case-to-case basis. And there are ways and means to determine motive, and especially behavior, conduct, and circumstances lead to inferences as to the motive behind these FIRs. अच्छा, एक चीज और है, पिछले कुछ समय से इस तरीके की FIR ज्यादा आ गई हैं। कोई भी मामला होता है, खासकर आपने राइटली सेड की एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके इस तरीके की FIR, मल्टीपल FIR दर्ज होती है अलग अलग जगहों पे। एक चीज और है जो इसके पीछे अक्सर ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी एक आदमी के खिलाफ किसी ने कोई ट्विटर पे डाल दिया या फेसबुक पे कोई कमेंट किया या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी कोई कमेंट किया, उसको लेके अगर किसी एक आम आदमी के खिलाफ, जैसे मैं अगर या कुछ डाल देता हूं फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर हो सकता है मेरे खिलाफ कई जगह से FIR हो जाए। ये भी हो सकता है एक आम आदमी अपना ओपिनियन, उसका जेन्युइन ओपिनियन हो, जो जनरली किसी सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं हो, जेन्युइनली, मैं यहाँ पे जेन्युइनली शब्द खासतौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मल्टीपल FIR होती है तो क्या आपको ये लगता है कि बहुत उस व्यक्ति के लिए ये बहुत आसान होता है इससे निपटना? क्योंकि अगर एक मान लीजिए दिल्ली में हुई FIR, एक लखनऊ में होती है, एक कहीं केरल के किसी कोर्ट में हो जाती है, और वो इतना साधन संपन्न नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके ये भी कह सके कि साहब सारी FIR एक जगह लाके मुकदमा किया जाए। तो आपको क्या नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं कोई नियम, कंट्रोल या कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इस तरीके की चीजें रुक सके? I totally agree with you that these multiple FIRs are being frequently registered against individuals over the last, 10 or 20 years. Now, it has become a trend, and this trend is, becoming a perennial problem in the criminal justice system. And definitely, multiple FIRs, they chill free speech. They chill freedom of speech and expression. And in my view, in sum and substance, in essence, it is one offense that has been committed, allegedly. That too, allegedly. It has to be tried and proven in the court of law. For example, if a journalist writes an article or delivers a speech on his TV channel, gives his radical views on a particular subject. Now, if multiple FIRs are registered across the state or across the country, definitely they amount to restricting his freedom of speech and expression or criminalizing his freedom of speech and expression. Now, we all know that the freedom of speech and expression is one of the shining stars of the Constitution of India. It is not only a fundamental right, but it is one of the most important fundamental rights. I will equate freedom of speech and expression, which is guaranteed under Article 19(1)(a), to be as significant as Article 21, which gives the right to life and liberty. Right to liberty. So it is a very significant fundamental right, especially in a democratic nation such as India. So therefore, these multiple FIRs definitely amount to harassment of the accused, harassment of the individual, and especially if the accused happens to be a journalist or maybe any citizen. Why should we give undue importance only to journalists? It can happen to any citizen, and a journalist is also a citizen of India. So definitely, these multiple FIRs, are
are a matter of grave concern, for the accused who is sought to be silenced. It's very difficult for an individual, जैसे आपने बोला कि भाई आपके खिलाफ अगर मल्टीपल FIRs रजिस्टर हो जाएं, so it will be very difficult. Now, every citizen does not have the means, or he does not have the resources to approach the Supreme Court. And the Supreme Court is also an overburdened court. The Supreme Court cannot hear every matter under the sun. It is not easy to approach the high courts also. For an ordinary citizen, or for a journalist, for a journalist who does not have the stature or the resources like Arnab Goswami, etc., it will be very difficult for him to approach the Supreme Court or the High Court. And should he focus on his journalism, or should he focus on getting those FIRs registered? So this has now become a problem in our criminal justice system. And definitely, ways and means have to be found to resolve this problem. And as a criminal side counsel, as a defense counsel, as a senior advocate, if I have thought over this issue, now some of these steps that can be taken to control this problem of multiple FIRs being registered against journalists and other citizens in different parts of the country. Some of the strategies or some of the rules that should be laid down by the Honorable Supreme Court to keep a check on multiple FIRs. Maybe one could be that before these FIRs are registered concerning speech-related offenses under the IPC, there should be a concept of preliminary inquiry. An FIR should not be registered immediately. The concept of preliminary inquiry is existing in our legal system, in our criminal justice system. And Lalita Kumari is a famous judgment of the Supreme Court, where the Supreme Court says that in certain offenses, there must be a preliminary inquiry before an FIR is registered. Now, in that list of 4 or 5 offenses, these speech-related offenses should be added to that category. So that's one check. The second check would be that if a journalist or if a citizen, if he is saddled with multiple FIRs, there should be some law which consolidates those FIRs under one umbrella. Yeah. At least in the state. अभी जिसके लिए एक उसको अप्रोच करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई सारी FIR जो है वो एक जगह सुनी जाए. करेक्ट. So एक legal mechanism होना चाहिए. There should be an inbuilt legal mechanism that at least within a state, all those FIRs should be consolidated in one place. This is another check. And then, the magistrate and the sessions courts and the high court of the state should be vigilant. They have to be vigilant. They should come to the rescue of the accused. Whether by granting anticipatory bail, or if the accused is arrested, then granting him regular bail. Now, another problem that I see is arising very frequently is a man is arrested in one FIR. The moment he secures bail in that case, the other police is waiting to arrest him, and so on and so forth. Now, this is also, in my view, it is an abuse of the criminal process. So some system, the Supreme Court should lay down some rules, to keep a check on multiple FIRs. Multiple FIRs may be registered, but how to consolidate them? How to ensure that the accused is not unduly harassed because of the multiple FIRs? So some rules of the game will have to be laid down, and I'm sure the Honorable Supreme Court will lay down some law in the times to come, because this problem is now, is on the rise over the last about 15-20 years. Now this has becoming more and more common in our system.
So I'm sure the law will be laid down in due course. इसकी एक वजह, आई थिंक इसकी एक वजह ये भी है कि जब से सोशल मीडिया का जिसे कहना चाहिए हमारे जीवन में छा गया है या हमारे जीवन को उसने कैप्चर कर दिया, उसके बाद से हर आदमी एक तरीके से विचारक बन गया है, सोचने वाला बन गया है। हर आदमी के अपने व्यूज होते हैं और उसकी सबको फ्रीडम है। तो वो व्यूज जब आते हैं, कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बुरे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि कैसे इसको। लेकिन एक चीज इसमें यह देखी जाती है कि जो मल्टीपल एफआईआर है वो नॉर्मली एक जगह एक मेन एफआईआर हुई और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि भाई उसके बाद अगर कोई नियम ये होना चाहिए कि अगर किसी एक मामले में एक एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद उसी मामले पे अगर कोई एफआईआर कहीं और किसी और स्टेट या शहर में होती है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट होगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। उसके बिना एफआईआर नहीं दर्ज होगी। एक तो ये नियम हो, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे मामलों में पुलिस खुद एफआईआर दर्ज करती है। तो क्या ये स्टेट का हैवी हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस नहीं है कि पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर रही है जबकि एक मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बाद फिर पुलिस ही एफआईआर दर्ज कर रही है कि साहब इससे पब्लिक क्या कहते हैं पीस को खतरा है या कोई भावनाएं भड़क सकती है। तो ये स्टेट हाई हैंडेडनेस को रोकने का भी तो कोई इंतजाम होना चाहिए। Definitely, in certain cases, I see, the element of the high-handedness of the state and the governments, the various states, etc. And maybe preliminary inquiry is only one of the several checks. अब जैसे preliminary inquiry will also be conducted by the state police. And if it is motivated, the preliminary inquiry will result in the registration of the FIR. FIR. Then you can add the law. The law can add certain more checks and balances into the system. For example, if the preliminary inquiry concludes that an FIR has to be registered, FIR deserves to be registered, then the law should be that it has to be confirmed by an order, by a judicial order of the magistrate, whether the preliminary inquiry has been conducted fairly, properly, whether there is application of mind, whether an offense is really made out or not. So the law must add judicial review to that process. Secondly, जो आपने कहा एक FIR हो गई तो why should the succeeding FIRs be registered? See, I will not, I don't agree to that proposition. It's too radical because it could be misused by the accused also. No. Mr. Sood, मेरा पॉइंट ये था कि जब एक एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एफआईआर है उस पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट हो। मेरा ये कह, मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। You are absolutely right. I understand the question. I totally agree with you. One FIR is registered. So before the subsequent FIRs are registered, there should be the concept of preliminary inquiry, and there should be, some judicial review also of that process. Before it gets converted into an FIR. Now, in some of these offenses, before you arrest the accused, the law laid down in Ganesh Kumar, Joginder Kumar, that arrest is not necessary in every case. Arrest must be governed by necessity. So the police should not be trigger happy in arresting the accused, really because there is an FIR. So now all these laws, some of the laws are already in place, but they have to be implemented in the right perspective, मिस्टर सूद, एक चीज और आती है कि आपने जब ये मल्टीपल एफआईआर के मामले देखे होंगे तो अक्सर ये बिल्कुल साफ होता है कि मोटिवेटेड एफआईआर ज्यादा होती है और वो भी मोटिवेशन भी वो जिसे कहना चाहिए स्टेट की तरफ से ज्यादा होता है या जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से होता है ये मोटिवेशन। इसको कैसे चेक किया जा सकता है? Very well. So, rather than commenting on individual cases, because, most of these cases are sub judice in the courts.
So it is not fair to comment, on the motives of individual cases like this. But having said that, the only check on this problem of multiple FIRs, is the judicial check. The judiciary must step in, especially the high courts being the constitutional courts, and in appropriate cases the Supreme Court, as well as the district criminal side judiciary. The judiciary is the only check against this abuse of criminal law through multiple FIRs. I repeat that I'm not going into individual cases and their motives, etc., etc. Let's not make this debate political in any way. But this problem is there in the legal system today, in our society today. And the judicial check is the only check that I see, which can actually prevent, the harassment of the accused by multiple FIRs. So the judiciary must rise to the occasion. The magistrate, before whom the accused is produced for the first time within 24 hours of being arrested. When the accused is produced, he must ask this question to the arresting officer: why have you arrested him? What is the necessity to arrest him? If he has written an article, or if he has given a statement, or if he has posted something on the social media, it is there. Prosecute him. File a charge sheet in the court. Why have you arrested him? And since the arrest is illegal, I am releasing him. So the first check is at the magisterial level. The second check is at the sessions court level, where these anticipatory bail applications are filed, or where if the magistrate does not grant bail, then the matters go to the sessions court. The sessions courts must examine this question at the second level. Then at the third level, you have the High Court. So you have, 3 levels of judicial hierarchy in the state itself. They must act, they must proactively, they must act. And wherever they find that injustice is being done because of these multiple FIRs, these FIRs appear to be motivated. Prima facie, they appear to be motivated. Immediate relief should be given to the accused, at least insofar as grant of anticipatory bail or grant of regular bail is concerned. Why should there be any delay? Then you have the High Court, and the High Court exercises supervisory jurisdiction over the district courts under Article 227 of the Constitution of India. The High Courts of the states also must be vigilant to keep this multiple FIRs problem, in check. So there are 3 levels, in the judicial hierarchy in every state of the country, and they have to proactively rise to the occasion to ensure that no undue harassment is caused to the accused because of these multiple FIRs. And of course, you have the apex court. The apex court, it's high time that the apex court must lay down the rules of the game, insofar as multiple FIRs are concerned, because they directly affect liberty of the citizen. They directly affect his livelihood of the accused. And above all, they have the effect of chilling free speech, which is again a fundamental right. So this is my subject. जो कि हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने विचारों को खुले तौर पे व्यक्त कर सकें। जी जी। तो विवेक सूद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। तो ये थे श्री विवेक सूद, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जिनका ये मानना है कि जो मल्टीपल FIRs वाला मामला, उसमें कहीं न कहीं चेक का सिस्टम जरूर आना चाहिए, और ये जो सिस्टम आएगा इसमें जुडिशरी को, न्यायपालिका को आगे बढ़ के काम करना होगा, ताकि इस तरीके का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक मिसयूज का जो एक तरीका शुरू हो गया, वो कम से कम रोका जा सके
और अगर पूरी तरीके से नहीं भी उठ सके तो कम से कम तो किया जा सके, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जो मोटिवेटेड एफआईआर की तरफ परेशान करने का तो मकसद किसी का सफल न हो कि किसी दूसरे को परेशान कर। विवेक सूद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। हम I will जल्दी ही just एक नए मुद्दे पे एक जी 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 बिल्कुल बिल्कुल I want to add before we sign off, I want to add one point. जी 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 See, at the same time, if there is actual incitement to violence, because freedom of speech and expression is not absolute. If there is yes, actual बिल्कुल incitement to बिल्कुल violence, बिल्कुल or there is, fake news, and there are, because, the freedom of speech is also being misused in certain quarters. For example, we have yes, seen, this on the farmers' protest. How the international yes, social media has been reacting, and there जी are question marks on जी on जी some of those reactions. Some of those reactions जी on the जी social जी media could be fake, could be जी politically जी motivated to destabilize the country, जी etc. So, बिल्कुल while on बिल्कुल one hand, these multiple FIRs is a problem and law must be laid down to keep a check on this abuse of criminal law through multiple FIRs. At the same जी time, when there is incitement to जी violence and there is an attempt to destabilize the country by using social media or by misusing social media, so such people should also be prosecuted at the same time. So it is not, बिल्कुल criminal law is not a बिल्कुल one-way street. बिल्कुल The जी जी innocent must जी be exonerated, but the criminal must be punished also at the same time. जी Thank you. Thank you. जी 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 थैंक यू विवेक सूद जी। तो ये थे विवेक सूद जी, जिनका मानना है कि जो मल्टीपल एफआईआर में है, ये एक तरीके से दुधारी तलवार है, जिसमें जुडिशरी को आगे बढ़ के इस तरीके के इंसिडेंट कम हो, उस पर काम करना होगा। लेकिन अगर कोई आदमी जानबूझ के ऐसा करता है तो वो भी बचना नहीं चाहिए, उसको भी सजा होनी चाहिए, या उसके खिलाफ भी प्रॉपर जो उचित कार्रवाई है वो होनी ही चाहिए। विवेक सूद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही लीगल प्लेटफॉर्म में एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे, और चलते कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you.